चलो, okay, all clear? So then we have constipation. ओल्ड एज में दादा दादी नाना नानी इनको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, उनका पेट साफ नहीं आता है, which is called as constipation. So what is exactly constipation? A decrease in the frequency of stools to less than 1 per week or difficulty in defecation. Bowel movement is less than once a week. Not every day like we have in the morning, they have it less than once a week. That is called as constipation. It results in abdominal pain, distortion, पेट बड़ा हो जाता है and rarely perforation. इतना fecal matter आपके rectum में जमा हो जाता है कि rectum में rupture in severe constipation, which is called as perforation. And some contributory factors include inactivity and low fiber diet. So, if you're not physically active, you will get constipation. Mainly fibers. Nice point. Sir, हमारे stomach intestine में सब कुछ digest हो जाता है. Fat, carbohydrate, protein. But we don't digest cellulose. Cellulose is digested by herbivorous animals. You remember? Appendix of herbivorous animals produce cellulase, which will digest cellulose, and our appendix doesn't produce cellulase, तो हमारा cellulose relatively digest नहीं होता है. And cellulose in the food we eat forms fecal matter. So fecal matter is primarily cellulose, which we get from green leafy vegetables, fruits, and these plant products will give you cellulose. So if your diet does not have in it enough amount of green leafy vegetables or fruits, and you are only eating pizzas and pastas and junk food, chances are you will suffer from constipation. तो इन cellulose को fibers कहते हैं. So low cellulose diet or a low fiber diet causes constipation. And specific symptoms of constipation which affect the colonic mobility are due to neurological dysfunction like diabetes mellitus or spinal cord injury. अगर आपको diabetes की बीमारी है, diabetes mellitus, in which blood sugar levels are high due to insulin deficiency, or you have a spinal cord injury, because of them you will get constipation. And how do you treat constipation? Tell the patient to drink a lot of water. Water will help in bowels to move, and along with increased fluid intake, have increased dietary fibers and exercises. If you exercise, your bowel movements become regular and have increased dietary fibers. In your diet include lot of green leafy vegetables, fruits, green vegetables, etc., pulses, etc. उसमें fibers काफी होते हैं. But still, suppose a person has severe constipation, then you give the person, I'm sure you have heard of it, a powder called as isabgol, और isabgol has a lot of fiber. तो उसे पानी में डालने के बाद रात को isabgol पीते हैं तो बहुत फाइबर इंटेस्टाइन में आ जाएगा, which will help in bowel movement और constipation clear हो जाता है.
उससे भी अगर वर्क नहीं होता है, then we give them क्रीमाफीन सिरप। क्रीमाफीन सिरप देते हैं, and क्रीमाफीन सिरप is given which will help in bowel movement. Or even if क्रीमाफीन syrup doesn't work, then we give them Dulcolex tablets. And Dulcolex tablets are very effective. उससे bowel movement अच्छा हो जाता है. And a natural way. Please remember, of course ये सब कोई आपको पूछने वाला नहीं है. I'm just teaching you for knowledge. Please give them castor oil. Castor oil is excellent. It causes fantastic bowel movement और आपका पेट एकदम साफ हो जाता है and prevents you from getting a constipation. So please remember this. Then we have jaundice. All of you, very important. Jaundice is so common in India. Many of you already must have had jaundice and many of you might suffer from jaundice. So what is exactly jaundice? स्कूल में सुना है, otherwise सुना है, your body becomes yellow, your skin becomes yellow, your nails become yellow, and that is called jaundice. But what exactly is jaundice? Jaundice is not a disease. Jaundice disease नहीं है. Jaundice is a sign of abnormal bilirubin metabolism and excretion. आपके बॉडी में जब excessive bilirubin हो जाता है and वो excrete होता है, उससे jaundice होता है. And jaundice develops when there is an abnormality in the metabolic sequence caused by excessive hemolysis of red blood cells with the production of bilirubin more than the liver can deal with due to commonly hepatitis virus. Sir, hepatitis virus नाम तो सुना होगा. Hepatitis A and hepatitis B. Drinking water or having food contaminated with hepatitis A causes jaundice, or blood transfusion or sexual intercourse and STD causes hepatitis B. और ये ध्यान से सुनना, बुक्स पे दिया नहीं है. What will these viruses do? They will go into the liver cell. And do you all remember, ध्यान से सुनना ही all of you, in the liver cells are found, I hope you all remember, Kupffer cells. Kupffer cells will try to kill hepatitis virus. And because there are hepatitis virus, hepat means liver. Hepat means liver, so hepatitis virus affects the liver. तो hepatitis के अंदर Kupffer cells will now start killing all the hepatitis virus, and liver, to kill hepatitis virus, produces excessive Kupffer cell. तो Kupffer cell excessive हो जाता है. And do we remember, these Kupffer cells will not only kill the virus, Kupffer cells phagocytose red blood cells. तो RBCs भी phagocytose होने लगते हैं, and as soon as RBCs get phagocytosed, what will they do? RBCs phagocytose will give out hemoglobin. And hemoglobin will break down to form heme and globin. Heme ion will go back to bone marrow and is reproduced, used for reproduction of new RBC. Globin gets converted into biliverdin, and biliverdin gets converted into bilirubin. And bilirubin will now
you remember, will pass via liver into blood, and via blood it will go into your kidney. And I hope you remember, in the kidney, bilirubin becomes urobilin, and urobilin passes in your urine, and your urine becomes yellow, dark yellow in color. तो यूरिन में एक्सेसिव यूरोबिलिन है, तो उससे डार्क येलो कलर यूरिन आता है. एंड डू यू रिमेंबर, बहुत ज्यादा बिलिरुबिन लिवर में है, तो इट विल प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन which will go from liver via the bile duct into intestine, and bilirubin will pass through your intestine, and in the intestine bilirubin will become stercobilin, and stercobilin will make your stools become pale white. तो स्टूल पेल व्हाइट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ stercobilin. एंड द थर्ड, व्हाट एल्स कैन हैपन, ये ध्यान से सुनना, ये हेपेटाइटिस वायरस. समटाइम्स देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द duodenum ड्यू टू गॉल ब्लैडर स्टोन. सर, आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स आ जाते हैं. गॉल ब्लैडर में जैसे किडनी में स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं. किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं. एंड कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर विल नाउ व्हाट विल दे डू? लिवर से जाएगा बाइल वाया सिस्टिक डक्ट इनटू गॉल ब्लैडर. बट गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, दैट मीन्स स्टोन्स है, तो गॉल ब्लैडर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एंड गॉल ब्लैडर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच मीन्स बाइल विल नॉट पास इनटू द इंटेस्टाइन. और बाइल इंटेस्टाइन में पास नहीं होगा तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल नॉट टेक प्लेस, and all the undigested fats will pass out in the stools of the person. By the way, bile अगर intestine में pass नहीं हो रहा है because gallbladder stones है, तो where will all the bile and bilirubin go in your blood? Via hepatic vein. और hepatic vein में excessive bile along with it bilirubin will go. And sir, हमारे ब्लड में bilirubin is conjugated. conjugated यानी क्या? bilirubin के साथ थोड़ा प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन प्लस bilirubin is called as conjugated bilirubin, and that is nicely taken into the kidney and is flushed out. उसको यूरिन में पास आउट हो जाता है. बट सपोज एक्सेसिव बिलिरुबिन बन रहा है एंड बहुत बिलिरुबिन बन रहा है, तो वो कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा क्योंकि लिवर में उतना प्रोटीन नहीं है. तो some will get conjugated, some will get unconjugated. And unconjugated bilirubin किडनी से यूरिन में पास नहीं होता है. Unconjugated bilirubin will pass in your blood, and unconjugated bilirubin deposits in fats everywhere. Unconjugated bilirubin is lipophilic, it loves fats. और आपके सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे जो फैट्स होता है उसे सबक्यूटेनियस फैट्स कहते हैं. एंड सबक्यूटेनियस फैट्स के अंदर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जमा हो जाएगा, which will give your skin a yellowish color, which we know as jaundice.
तो जॉन्डिस में स्किन येलो क्यों हो जाती है? बिकॉज इट हैज बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट में डिपॉजिट हो जाता है एंड विल कॉज येलोइंग ऑफ द स्किन, येलोइंग ऑफ द palm, yellowing of the nails, yellowing of the eyes, the conjunctiva becomes yellow and it causes itching in the skin which is called pruritus. तो pruritus यानी itching हो जाता है. Sir, this is it. How do you treat hepatitis and jaundice? तो sir, ये आपके सिलेबस में नहीं है. Again knowledge, just knowledge. हेपेटाइटिस ए वायरस ना इज द सेल्फ लिमिटिंग वायरस. तो हेपेटाइटिस ए वायरस में कुछ करने की जरूरत नहीं है. इट विल विदिन 14 डेज सबसाइड बाय इटसेल्फ और आपका जॉन्डिस चला जाएगा. तो आपको अगर जॉन्डिस हुआ था, इट वाज हेपेटाइटिस ए वायरस जो सेल्फ सबसाइड हो गया. हाँ, somebody को अगर सेक्सुअली या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है तो उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं. एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देते हैं और साथ में देते हैं इंजेक्शंस ऑफ इंटरफेरॉन. इंटरफेरॉन आर एंटीवायरल प्रोटीन. इंटरफेरॉन आर एंटीवायरल प्रोटीन. तो इंटरफेरॉन इंजेक्शन विल ट्रीट हेपेटाइटिस बी. एंड अगर उसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन को निकाल दिया जाता है. अगर गॉल ब्लैडर में बहुत ज्यादा स्टोन्स है तो गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं एंड रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज कोलेसिस्टेक्टमी. कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं, गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं एंड द बाइल डक्ट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पैंक्रियाटिक डक्ट व्हिच विल ओपन इनटू द duodenum via sphincter of Oddi. So gall bladder is removed, no storage, and directly bile will be joined with pancreatic duct and open into sphincter of Oddi into duodenum. That is called cholecystectomy. And certain things are done. जब आपको जॉन्डिस होता है, आपको ये बताया जाता है ये खाने का, ये नहीं खाने का. तो कैन यू टेल मी क्या खाने का और क्या नहीं खाने का? बहुत सारा शुगर केन जूस पीने का, बहुत ऑरेंज जूस पीने का, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने का, एनर्जाल पाउडर पीने का. Why? Because if you remember, liver is diseased and liver is a storehouse of glycogen. So now diseased liver में glycogen store नहीं हो रहा है. So blood sugar level will become less and give the person lot of fruit juices, lot of energal, electrol powder जिसमें sugar होता है, and all that sugar will go in the blood and his blood sugar level will increase. Sugar cane juice देते हैं, sugar cane levels will increase. तो उसको बेचारे को चक्कर नहीं आएंगे and he will remain fine. What not to give? Don't give protein. दाल मत दो, पल्सेस मत दो, मीट मत दो. क्यों? क्योंकि प्रोटीन से भी remembered form amino acids, and amino acids to be remembered if are not used in the liver, they undergo deamination to form ammonia, which forms urea by the ornithine cycle. Now liver is diseased, which means deamination will not take place
and free amino acid will go in the blood. And do you remember, free amino acid brain में जाएंगे and will interfere with the person's brain working. Amino acid causes brain toxicity. तो उसको बहुत सारे hallucinations आएंगे. He will see things which are not there. He will have anxiety, fear, depression because of amino acids in the brain. So don't give him protein. Don't give him fats. Because what will happen if there are say stones in the gallbladder? Stones in the gallbladder, bile is not reaching your duodenum. तो आपने फैट दिया तो डिओडेनम के अंदर फैटी फूड तो पहुंच जाएगा, बट बाइल नहीं है तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स विल नॉट टेक प्लेस एंड ऑल अनडाइजेस्टेड फैट विल अक्यूमुलेट इन द रेक्टम और उससे भी होता है कॉन्स्टिपेशन. तो फैट्स अगर दोगे तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो ये ट्रीटमेंट ऑफ दिस वेरी नाइस लॉजिक कॉल्ड एज jaundice. And then we have vomiting or regurgitation. It is reverse peristaltic movement due to which stomach contents are thrown out of the mouth. And it is controlled by non-vital vomiting center of the medulla. सर, आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है कॉल्ड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और उसमें एक सेंटर होता है कॉल्ड एज वॉमिटिंग सेंटर. एंड वॉमिटिंग सेंटर क्या करेगा? आपका अगर स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव फूड है या आपने बहुत स्पाइसी फूड खाया तो बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे आपको बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपका मेड्यूला के अंदर होता है वॉमिटिंग सेंटर. It will give a message to your stomach and your stomach will powerfully contract and your cardiac sphincter will open. First you will get a sensation of vomiting and that sensation of vomiting is called nausea. तो वो nausea होता है followed by actually vomiting out. Vomiting which is also called as regurgitation. तो उसमें स्टमक का सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाता है, आपकी एसिडिटी कम हो जाती है, पेन कम हो जाता है एंड नाउ यू फील नाइस, यू फील बेटर. So where is the vomiting center found? Please remember in the medulla oblongata of the brain. And we end today's lecture with a disease called as diarrhea. बहुत कॉमन इन्फेक्शन है ये. डायरिया हम सबको बचपन में हुआ है. डायरिया इज लूज वॉटरी स्टूल्स. तो पानी जैसा स्टूल्स होता है. हैविंग डायरिया मींस पासिंग लूज स्टूल 3 or more times a day. तो दिन में 3 से ज्यादा बार वॉटरी स्टूल्स पास होते हैं. दैट इज डिफाइंड एज डायरिया. And diarrhea lasting more than 2 days is a sign of more serious problem. बहुत ज्यादा डायरिया हो गया, it's a serious problem. And diarrhea of any duration causes dehydration. डायरिया में बहुत पानी बाहर जाता है बॉडी से, so your body is deprived of water, which is called as dehydration. And also fluids and electrolytes will pass out. आपके बॉडी में नर्व्स के लिए, मसल्स के लिए, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब बॉडी में होना बहुत जरूरी है फॉर ब्रेन टू वर्क, मसल्स टू वर्क, मेटाबॉलिज्म टू हैपन. डायरिया में वाटर के साथ सारे इलेक्ट्रोलाइट पास आउट हो जाते हैं.
तो यू गेट सोडियम डेफिशिएंसी, उससे पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, ताकि बॉडी एक पूरा बॉडी टूट जाता है बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम डेफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है एंड वाटर डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन होता है। एंड along with it there is loose stools contain more fluid and electrolyte and weigh more than solid stool। तो पूरा पानी वाला स्टूल होता है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर पास आउट हो जाता है। एंड third, acute diarrhea, you get once a while diarrhea is because of bacteria, viruses or parasitic infection। बैक्टीरिया नाम सुना होगा, सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड बैक्टीरिया causes diarrhea, and viruses, gastroenteritis virus causes diarrhea। If you have heard of it, these are diarrhea। Parasitic infection, parasite including, you all must have heard of it, amoeba causes amoebiasis, and amoebiasis will cause severe diarrhea, that is acute, once a while। And then there is something called chronic diarrhea, is related to a functional disorder like irritable bowel syndrome। So irritable bowel syndrome, IBS, तो उसमें chronic diarrhea होता है। This person has got something कि he is allergic to some kind of food। Many children, in case you must have heard of it, have got lactose intolerance। तो अगर उनको दूध पिलाया गया तो दूध में होता है मिल्क शुगर कॉल्ड लैक्टोज, they are allergic to lactose and they get lactose intolerance and immediately diarrhea होता है। इसे irritable bowel syndrome diarrhea कहते हैं। ये chronic diarrhea है, होते ही रहता है। तो sir, how will you treat diarrhea? Again, this is not in syllabus, but I will teach you, you should just know this। सबसे पहला प्रायोरिटी है, डायरिया हुआ, गिव द पेशेंट सफिशिएंट वाटर। तो स्कूल में सुना था बच्चों को जब डायरिया होता है उनको ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिए जाते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट शुगर को पानी में मिला के उसका चम्मच से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वो पिलाया जाता है। तो बॉडी में सॉल्ट भी आ जाएगा, बॉडी में शुगर भी आ जाएगा, बॉडी में वाटर भी आ जाएगा, तो डिहाइड्रेशन भी चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी चला जाएगा। दैट इज फॉर चिल्ड्रन। फॉर एडल्ट्स, नाउअडेज इवन फॉर चिल्ड्रन, यू गिव ग्लूकोज सलाइन इंजेक्शन। तो ग्लूकोज सलाइन में ग्लूकोज के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं एंड दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग डायरिया। तो उससे डायरिया प्रिवेंट होता है। अलॉन्ग विद इट गिव इलेक्ट्रॉल पाउडर और एनर्जाल पाउडर। आजकल ऑरेंज फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जो आते हैं उसमें शुगर, सॉल्ट, वाटर होता है। तो उसको एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच डाल के पिलाओ तो आपका डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस अच्छा हो जाता है। इफ यू हैव गॉट अमीबियासिस और यू हैव गॉट वायरल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन, पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट कौन से रीजन से डायरिया हुआ है। तो आपका स्टूल, जब वाटरी स्टूल होता है ना, उसका समथिंग कॉल्ड कल्चर करते हैं। अगार अगार करके एक जेली होती है, उसके ऊपर ये ढूंढा जाता है कि व्हाट इज द कॉज, अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया। तो उसमें कल्चरिंग होता है। इफ इट इज अमीबा, विच इज मोस्ट कॉमन इज अमीबा,
तो अमीबा के लिए यू गिव tinidazole and tinidazole दिया जाता है. If it is bacteria like salmonella typhi, typhoid bacteria, then you give antibiotics like ciprofloxacin. और आजकल क्या करते हैं कि ये आपका स्टूल कल्चर करने में टाइम लगता है, तो टाइम लगता है तो बेस्ट इज डोंट वेट टू फाइंड आउट वेदर इट इज बैक्टीरिया और वेदर इट इज अमीबा. यू गिव अ कॉम्बिनेशन of bacteria, antibacterial and anti-amoebic drug. तो उसको ciprofloxacin और tinidazole को मिक्स किया जाता है and that is a medicine called as ciprofloxacin. Ciprofloxacin is ciprofloxacin plus tinidazole. Ciprofloxacin plus tinidazole. तो वो कॉम्बिनेशन दे देते हैं जिससे डायरिया कम हो जाता है. एंड इफ इट इज वायरल इन्फेक्शन, इफ इट इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस, और इफ यू हर्ड ऑफ इट रोटावायरस causes diarrhea, give vaccine against rotavirus. For gastrointestinal infection, antiviral medicines are given. And समझो a child is having irritable bowel syndrome, तो find out what is the child allergic to and find out अगर वो allergic है किसी फूड को तो उसको वो फूड नहीं देने का. हाँ, समझो इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में वर्स्ट इज मदर्स मिल्क नहीं दे सकते क्योंकि उसमें तो लैक्टोज आ जाएगा. तो चाइल्ड को सेरेलैक देते हैं, सेरेलैक विच इज लैक्टोज फ्री सेरेलैक, एंड उसको प्रोटीन देना है. तो आजकल सोया मिल्क बनाया जाता है. यू कैन गो टू नेचर्स बास्केट एंड ऑल दीज प्लेसेस एंड यू कैन आस्क देम फॉर सोया मिल्क. इट इज मेड फ्रॉम सोयाबीन, इट इज रिच इन प्रोटीन but it doesn't have lactose, और बच्चों को सेरेलैक विदाउट लैक्टोज या सोया मिल्क इज गिवन एंड वी डोंट गिव लैक्टोज, तो उसकी लैक्टोज इंटॉलरेंस को भी ट्रीट किया जाता है. चलो, so we had a very nice lecture today. We learned a lot about disorders of the digestive system. With that, we have finished off with the entire chapter of nutrition. Very, very important chapter. Please study it well. Today's Zoom session, we will talk about everything. Please study notes, NCERT, and finish solving MTG and Arihant, and we will solve, like we did for reproduction, every possible doubt that you have from MTG and Arihant. सब के सब क्वेश्चन बराबर से सॉल्व करेंगे हम लोग. बहुत जल्दी आपकी टेस्ट होगी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन. प्लीज प्रिपेयर दैट. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.